Friends, good morning. We have already discussed the sectors of Indian economy. Okay, students. Now we are going to talk about sectors in terms of the ownership. First of all, students, we have talked primary sector, secondary sector, and tertiary sector. And now we are going to talk the sectors terms of ownership. Ownership इट मीन्स स्वामित्व, यानी कि ओनरशिप के आधार पर कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल पब्लिक सेक्टर. व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक सेक्टर? द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. स्टूडेंट्स, ऐसे सेक्टर, ऐसे एसेट्स जहां गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और गवर्नमेंट ही सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, दीज आर कॉल्ड public sector. Okay students, now what is the motive of public sector? Public sector का motive क्या होता है? तो motive होता है to provide services प्रोवाइड करवाना. केवल एक ही motive होता है कि हमें सर्विस प्रोवाइड करवानी है. वो उन सर्विस के बदले में जरूरी नहीं है कि वो प्रॉफिट अर्न करे. ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं. रेलवे एंड पोस्ट ऑफिस. रेलवे हैं, पोस्ट ऑफिस हैं, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर्स. स्टूडेंट्स, हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर? द गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स. इट मींस दोज सेक्टर which owns by government known as public sector. Now private sector, ownership of assets, delivery of services in the hands of private individuals or companies. Private individual and company, किसी एक आदमी या ग्रुप ऑफ पीपल के हाथों में जब सर्विसेज आ जाती हैं तो वो होता है प्राइवेट सेक्टर. एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर? टू अर्न प्रॉफिट. सर्विसेज तो ये भी देते हैं, लेकिन इनका मोटिव जो मेन होता है वो क्या होता है? अर्न प्रॉफिट. और पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस, नॉट टू अर्न प्रॉफिट. ओके स्टूडेंट्स, एंड यू कैन गिव द एग्जांपल टिस्को एंड रिलायंस. टिस्को मीन्स टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. ओके, एंड रिलायंस, इट इज नॉन प्राइवेट सेक्टर. Student, you can explain the difference between public sector and private sector. It can be asked in your exam. Differentiate between the public sector and private sector. So, first of all the definition, and then motive, and then examples. Okay. Now, why government is needed to spend? अब student, क्या जरूरत है सरकार को कि वो कुछ सर्विसेज पर स्पेंड करें, प्राइवेट सेक्टर को दे दें, सब वो करते रहेंगे? नहीं. इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? मेनी सर्विसेज आर नीडेड बाय द सोसाइटी एज ए होल, बट प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट. देयर आर सो मेनी सर्विसेज, कई सारी सर्विसेज हैं जो पूरी सोसाइटी की जरूरत होती है, पूरी सोसाइटी को वो चीजें चाहिए. तो ऐसी जो आवश्यकताएं होती हैं, जरूरत, नीड्स होती हैं, गवर्नमेंट के नॉट प्रोवाइड इट टू द प्राइवेट सेक्टर. गवर्नमेंट इसे प्राइवेट सेक्टर में नहीं देगी, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इट्स ऑन इट स्पेंड इन these sectors to provide services at reasonable cost. Okay students, for example construction of roads and bridges and railways. अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया कि आपको रोड बनाना, ब्रिज बनाना है, रेलवे बनाना है, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, आप अपने हिसाब से करते रहिए, प्राइवेट कंपनी को दे दिया, तो उस रोड की सर्विस लोगों के लिए बहुत महंगी हो जाएगी, उस ब्रिज की सर्विस, उस रेलवे की सर्विस लोगों के लिए बहुत महंगी हो जाएगी. क्यों? व्हाई? बिकॉज द मोटिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज अर्न profit. Okay students, now government is required to support some services
Example, selling electricity at the cost of generation and PDS system, public distribution system, as you have already read in class 9th, public distribution system. ये सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर में नहीं दी जाती हैं, गवर्नमेंट इसे अपने पास रखती है ताकि रीजनेबल कॉस्ट पर वो काम हो सके. ओके, नेक्स्ट थिंग, सम एक्टिविटीज आर प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दीज हेल्थ एंड एजुकेशन. Some basic needs, some basic facilities, responsibility of government, some activities, primary responsibility. What are primary responsibility? Health and education. These facilities must be provided by the government to people at a low cost. Okay, and students, remember, from where does the government receive the funds to spend on these facilities? कहाँ से सरकार के पास कहाँ से आएगा पैसा इन पर स्पेंड करने के लिए? तो वो कहाँ से आता है? गवर्नमेंट रेज मनी थ्रू द टैक्सेज. गवर्नमेंट सर्विस टैक्स लगाती है, इनकम टैक्स लगाती है, प्रोडक्शन टैक्स लगाती है. तो जितने भी तरह के टैक्सेज हैं वो उसके थ्रू क्या करती है? गवर्नमेंट अर्न करती हैं और हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, उस पर वो स्पेंड करती हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या करना चाहिए? हमारे टैक्सेज जो हैं प्रॉपरली और ऑनेस्टली हमें पे करनी चाहिए. हैव यू गॉट इट स्टूडेंट्स?